RRB JE YouTube channel. I'm Vikas Sir, and I wish you all happy Diwali. Today is happy Choti Diwali. So you can say happy Diwali to everyone from entire Resultant family, and good evening to everyone. So just one night before Diwali, we are basically conducting this session for all of you, and today we are going to discuss 50 important questions of thermodynamics, applied thermodynamics and fluid mechanics, and duration of the session will be 1 hour. So good evening everyone. This session is important for all the students who are preparing for RRB JE and SSC JE 2024 CBT2 exam, who will be writing CBT2 exam of SSC JE and RRB JE obviously after clearing the RRB JE CBT1 exam, which will be scheduled in the month of December. So good evening everyone. Hello Neeraj, good evening, happy Diwali. So happy Diwali to all of you, and advance to all of you. I hope all of you are celebrating Diwali with your family, and I wish you a very brightful, full of success, prosperity in your life. Okay, this Diwali you should whatever you I wish that this year, if you're preparing for some exam, or if you have to write some exam, you come out with flying colors in those exams, whether it is SSC JE or RRB JE. So I wish you all for that. Theoretical marathon class also needed. Manoj Prabhakaran. Definitely we will plan some theoretical marathon classes, and we will be doing some changes obviously in the month of November. After Diwali, we'll plan some theoretical classes also. Don't worry, okay? And हम कोशिश करेंगे कि आपको क्लासेस हिंदी में प्रोवाइड करें, अपार्ट फ्रॉम प्रोवाइडिंग द क्लासेस इन इंग्लिश, हिंदी में और थियोरिटिकल क्लासेस दोनों प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे. सो गुड इवनिंग एवरीवन. First of all, those who have not subscribed this channel yet, you guys daily come in the classes, and but if you don't subscribe the channel, then obviously you will not get the direct notification from this YouTube channel. So if you don't want to miss any videos from this YouTube channel, do not forget to subscribe it, and also press the bell icon which is just near to the subscribe button. Do not forget to like and share the session as well. My dear students, I want to give you a brief introduction about myself. I am faculty of mechanical engineering. My name is Vikas Sir. I have more than 7 years of teaching experience. The subjects I have expertise in are the fluid mechanics subject and thermal applied subject. And for these two subjects, they are not two, actually there are 5 subjects in total. For these subjects today I am going to take some important class, and this is my qualification and achievements. The first question of today's session is a closed system. Yeah, there is important announcement also, that you can see that on this Diwali we are providing you 60% off on all our A and JE courses. So whether you are preparing for CBT2 exam of RRB JE, or you are preparing for combined CBT1 and CBT2, or you want to prepare for only CBT1, although if you are preparing for CBT1, I think you have already joined our course, right? So if you buy any course of AJ from Resultant, you will get 60% off. This offer is valid only from 30th of October, that is from today till 2nd of November, till Saturday. Okay, so that's an important information. You can also share this information with your friends and to all your colleagues, classmates, those who are preparing for any JE exams. Currently, I can see we have just 2 students. One second. So I would request everyone to please do not forget to share the session also. A closed system of constant volume experiences a temperature rise of 50 degrees Celsius when a certain process occurs. Just a second. The heat transfer in this process is 100 kilojoule. I think internet is fine. Yeah, it is fine. Okay, directly Neeraj Kumar has given option C as the answer for this question. Okay, according to Neeraj, this is the answer. Please try everyone else. Everyone please try this question. The temperature rise is given as 50 degrees Celsius. Constant volume condition is given, for which temperature rise is given. The heat transfer in the process is given as 100, that is, it is plus 100 kilojoule.
The specific heat at constant volume CV is given as 1 kilojoule per kg degree Celsius or kg Kelvin. The system contains 3 kg of this substance. Work done on this gas will be. So my dear students, you need to understand that in order to find the work, you can apply the first law of thermodynamics, Q minus W is equal to du. The heat transfer is already given in this question, which is 100 minus work transfer is equal to change in internal energy. Now change in internal energy you can find directly by using mCv delta T. The mass is given as 3 kg, CV is 1 and delta T is 50. This will be 150. Okay, so this will be 100 minus work is equal to 150. So work will be equal to minus 50. Okay, so very good, Neeraj, your answer is absolutely correct. Guys, also if you want to, if you need any guidance regarding RRB JE, how to prepare for RRB JE exam, then you can also click on the link which is given here, and you can fill this Google form so that we can properly guide you regarding your RRB JE preparation. And as you can see in the chat box, our support team has shared the important details of our Resultant mechanical app as well as some support numbers. Please do contact these numbers if you are having any query. A pressure volume diagram is shown in the figure with 3 isotherm. Isotherm means constant temperature lines. So you can see that this is a pressure and volume diagram. Pressure volume diagram. The constant temperature, these are all constant temperature lines. Okay, constant temperature lines are given here. 4 processes are represented. 4 processes are represented in the diagram and are identified as 1, 2, 3 and 4. Then the process 1, the process 2, 3 and 4 will be. So you need to understand that if this is a pressure volume diagram, obviously this process is going to represent constant pressure and this will be constant volume. Now about these two processes, what will be 2 and 3? So you know that if you see the slope with respect to horizontal, this will be constant temperature and this will be adiabatic. Okay, so 1 will be constant pressure, isobaric, 2 will be isothermal, 3 adiabatic and 4 isochoric. So the right answer is option C. Very good, Neeraj. Your answer is absolutely correct. Consider the following statement: for a given compression ratio, the Otto cycle is more efficient than diesel cycle. For an Otto cycle, an increase in the compression ratio leads to an increase in the mean effective pressure, but decrease in the thermal efficiency. Yes, everyone. I know that today the number of students are. It was expected that before Diwali, maybe some of the students will be celebrating Diwali with their family members. So at this time, taking the class might not have some live students in the class, or the live students in the class may be less. But I believe that if those students who are preparing for the RRB JE and SSC JE exam, if you really want to crack the exam this year, then you should watch this session either live or recorded, because this session I'm taking only for the students who are actually preparing for these examinations. This statement, for a given compression ratio, Otto cycle is more efficient. Yes, 100% here. This is correct. For an Otto cycle, increase in compression ratio leads to increase in mean effective pressure, but decrease in efficiency. Now, this statement is wrong, because for Otto cycle, if compression ratio is increased, the efficiency of the Otto cycle depends on compression ratio. It is 1 minus. Hello Geet, how are you dear? Meeting you after a very long time. कैसे हैं आप? Yes, I think many of my students have got selected in some exams, so that's why they are not coming the classes, because obviously you have achieved your goal of getting selected in some government exam. So that's why many of my students have cracked either SSC JE or other exams. Okay, so for this, only only A is the right answer, that is option C, because this is wrong. Because if you talk about the mean effective pressure, the mean effective pressure is the pressure at the inlet of the. मैं भी ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ. Keep steady. I'm absolutely fine, and I hope the same for you. And happy Diwali! Happy Diwali to all the dear students. I wish you all a very happy Diwali, and
I'm good, Geet. I'm absolutely fine. So you can see that from here that mean effective pressure is also directly proportional to the compression ratio. So if compression ratio increases, mean effective pressure auto cycle will also increase. Next question. An IC engine has a brake power of 720 kilowatt with a fuel whose calorific value is 32 megajoule per kg. The engine is expected to consume 60 gram per second of fuel. Calculate the brake thermal efficiency of engine. A numerical based question, obviously, numerical based question will come in the, see, when you're preparing for CBT2 exam, it is expected that you will see some numerical based question also, right? So my dear, in this question, they are asking the brake thermal efficiency. The brake thermal efficiency, what is the formula for brake thermal efficiency? It is brake power to the mass of the fuel into calorific value of the fuel. ठीक है? This is the formula. State के एग्जाम देने हैं सर, ITI group instruction like and all. Okay. Good, Geet, good. You are from Himachal Pradesh? HP? Yeah, it's a beautiful place also. You can definitely try for state exam. You should try. And if you get selected, it's obviously a, getting your job in such places is really nice. Just a second. Yeah. So brake power is given as 720 kilowatt. 720 kilowatt, or you can say 10 power 3 watt in terms of watt, or you can say kilowatt only, but this is in megajoule. So if you put this in 720 kilowatt, if you put in kilowatt, this should be in kg per second. So how you will find by kg? You divide by 1000 and into, बिल्कुल याद है. I remember all my students. I remember everyone, each of my students. Okay. So I really, when I used to communicate with you guys, जब मैं आप लोगों से सेशन के बीच में बात करता था, so it was not like just okay, Geet, you are from where? So I know everything, that I remember each and everything. Okay. So efficiency will be 3.75. I think 37.5 it should be there. Just a second. Okay, it's 720. Yeah. So it will be 0.375. Okay, option C. Are you all getting this answer? क्या आप सबका ये आंसर आ रहा है? The second law of efficiency of a process defined as C. हैप्पी दिवाली राकेश, हैप्पी दिवाली. बिल्कुल नेगेटिव, देखिए नेगेटिविटी किसके लाइफ में नहीं है. नेगेटिविटी को हटाने के लिए देखिए दिवाली, जो टॉक, दिवाली एक ऐसा फेस्टिवल भी है जो लाइफ में नेगेटिविटी हटाने के लिए आप दिए जलाते हैं. तो अपनी लाइफ में नेगेटिविटी हटाने के लिए मन का दिया जलाइए. एंड हाउ यू कैन लाइट द मन का दिया? अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश करिए. ओके, ऑलवेज फोकस ऑन योर ड्रीम, राइट. कभी कभी समय ज़्यादा लग जाता है आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए. समटाइम्स इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम, लॉट ऑफ एफर्ट्स. ओके, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप, नेगेटिविटी सबको सराउंड करती है, ऐसा कोई इंसान नहीं इसके आसपास नेगेटिविटी ना हो, राइट. लेकिन हमें उससे लड़ना ही पड़ता है और उसके लिए पॉजिटिव होप का दिया जलाना पड़ता है, जैसे आप दिवाली पे जलाते हैं. The second law of efficiency is defined as, see, second law of efficiency, if you really see the formula of second law of efficiency, it is equal to the actual efficiency to the reversible efficiency. Okay, or you can say that actual efficiency is actually the ratio of actual work output to the maximum work output that you get from the reversible engine. Now this is the formula with respect to work producing devices. Okay, now you can also write the second law efficiency. आप second law efficiency को, रिश्तेदारों की क्या सुनना, आप देखिए, it's a very simple concept.
कि you should be only worried about, or even not worried about, or you should be only focused on what your parents or your mother and father tells you. Okay, अगर आपके माता पिता आपके लिए क्या कहते हैं वो आपको सोचना चाहिए, रिश्तेदार ये सब लोग क्या कहते हैं इससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, राइट? एंड सबसे इंपॉर्टेंट है आप क्या सोचते हैं, राइट? So it is refrigeration effect divided by actual work to the refrigeration effect divided by maximum COP. When the COP will be maximum, when the work input is minimum. Okay. So the formula of second law efficiency will be minimum work to the actual work in terms of this, in terms of work absorbing devices. देखिए एक बार जब एज हो जाती है, आप यू आर क्लोज टू योर 27, 28, आपके एग्जाम नहीं निकल रहे होते हैं आफ्टर रिपीटेड एफर्ट्स ऑफ 2 or 3 टाइम्स गिविंग द एग्जाम, प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम, तो ऐसा नेगेटिविटी आपके अंदर और आपके आसपास के लोग फैलाते हैं। लेकिन आपको मैं बता देता हूँ कि जो IAS एग्जाम की तैयारी भी करते हैं ना, कई बार उनको भी 6 अटेम्प्ट में, उनका आखिरी अटेम्प्ट में एग्जाम निकलता है, राइट? बट वो हिम्मत नहीं छोड़ते हैं। The ratio of minimum exergy intake to perform the given task, so the actual exergy intake to perform the task. Okay, so now out of the given options given, because they are talking about exergy is the work. Okay, with respect to intake work, the formula which suits here for the second law efficiency is not option A, my dear, right? Because they are talking intake, exergy intake they are talking about to perform the task. They are talking about intake, so it will not be option A. No, it will be option D, because they are talking about work absorbing devices. Are you getting this or not, everyone? So option D will be the right answer. A reversible engine is operating with temperature limits of 800 Kelvin and 300 Kelvin. If it takes 560 kilojoule of heat, then unavailable work should be. And if you need any other guidance, you can contact me through my Telegram also. It's not that like that. कभी कभी लाइफ में आपको थोड़ा सा पुश की जरूरत होती है, एंड यू ऑलवेज नीड सपोर्ट ऑफ द पीपल। सी, आप हमेशा वैसे भी देखा जाए, आपको जो पॉजिटिव बातें आपके लिए करे उन्हीं से बात करनी चाहिए, क्योंकि नेगेटिविटी वैसे भी लाइफ में बहुत है। तो अगर आपसे कोई नेगेटिविटी की बात करता भी है, ऐसे लोगों से दूर रहें, राइट? मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि मैं आपको हमेशा कह रहा हूं पॉजिटिव सोचते रहो, लेकिन मेहनत मत करो। मेहनत आपको करनी पड़ेगी, राइट? आपका काम है 100% मेहनत। मेहनत का मतलब ये नहीं गधों वाली मेहनत। मेहनत का मतलब है कि स्मार्ट वर्क करना है आपको अपनी अच्छे से पढ़ाई करनी है, और बाकी अपने पे भरोसा रखना है। ओके, ट्रस्ट योर सेल्फ, ओके, ऑलवेज ट्रस्ट योर सेल्फ एंड 100% मेहनत, दैट्स ऑल। Reversible engine operating with this temperature takes this much heat, unavailable work. So first of all, you need to find the maximum available energy or available work. That is going to be the heat, total heat supplied 1 minus lower temperature by higher temperature. And this is Q, which is 560. 1 minus lower temperature is 300 divided by 800. This is 560 into 500 by 800. 8 7 ja 56. This will be 350. 350 kilojoule will be the value of maximum work. Now they are asking about the unavailable work. How to find the unavailable work? Now you know that when you talk about the reversible engine, in the case of the reversible engine, the total energy, which is nothing but, what is total energy? That is, Renault and Neeraj, your answer is correct. Very good. It is sum of available energy. Total energy क्या है? Sum of available energy plus unavailable energy. Now what is total energy? The total energy is the total heat which is supplied. So here 560. Available energy is this. This is available energy जो आपने निकाल लिया है अभी, right? This is available energy. आप इसको रख देंगे 350. 560 minus 350, you will get 210. और absolutely answer is correct. Very good. Now this is a good question. Because it tells you the concept of
which device follows the first law or second law, right? A device is given here as cyclic device. This is a symbol of a cyclic device. एक cyclic device आपको दे रखी है which is taking the heat as input and giving you work as output. Okay, but the problem is it is converting entire heat into work. That is, entire heat is equal to work. That means efficiency is 100%. क्या किसी डिवाइस की एफिशिएंसी 100% हो सकती है? इम्पॉसिबल. Impossible that a device is having 100% efficiency according to second law. So जो चीज इम्पॉसिबल है सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग उसे क्या बोलेंगे? दिस विल बी कॉल्ड एज PMM2. It will violate the second law of thermodynamics, but will it violate the first law? Will it violate the first law? It violates the second law for sure. Now, second point. According to first law of thermodynamics क्या कहता है? First law कहता है net heat transfer is equal to net work transfer for a cycle, right? What is net heat transfer? इस डिवाइस के लिए net heat transfer क्या है? This. Net work transfer is this. Both are equal. That means first law is not violated. That means this device obeys the first law but does not obey the second law. Okay. The device given in the picture here is obeying the first law of thermodynamics but not following the or not obeying the second law of thermodynamics. There are some statements given here about. See, this is a match the following type question. List 1 में कुछ चीजें दे रखी like most efficient working fluid, detonation and octane reading. In the list 2 they are mentioning about polyatomic gas, monoatomic gas, auto ignition and knock resistance. Okay, ये सब चीजें दे रखी हैं. आपको यहाँ पे मैच द फॉलोइंग में इसको क्या करना है? मैच करना है. Now, these statements are given with respect to auto cycle, petrol engine. Remember. तो ऑटो साइकिल में आपको पता है कि एफिशिएंट की बात करें, एफिशिएंसी में मोस्ट एफिशिएंट फ्लूइड की बात करें, एफिशिएंसी ऑफ द ऑटो साइकिल इज 1 बाय कंप्रेशन रेशियो पावर गामा -1, एंड यू नो दैट गामा इज मैक्सिमम फॉर अ पॉलीएटॉमिक गैस. अगर पॉलीएटॉमिक गैस होगी तो उसका गामा जो होगा वो सबसे ज्यादा होगा, राइट? नो, इट इज मिनिमम फॉर अ पॉलीएटॉमिक गैस. Right? It is minimum. Understood? Polyatomic gas की इसकी वैल्यू मिनिमम होगी, that is 1.33, and it is maximum for a monoatomic gas. It is having the gamma of 1.67. Okay, so most efficient working fluid कौन होगा? जिसका गामा सबसे ज्यादा होगा, यानी मोनोटॉमिक गैस. डेटोनेशन क्यों होता है? व्हाट इज द रीजन फॉर डेटोनेशन इन द ऑटो साइकिल? दैट इज ऑटो इग्निशन ऑफ एंड चार्ज. जो एंड चार्ज है आपकी ऑटो साइकिल में और पेट्रोल इंजन में, अपने आप जल जाता है व्हेन इट रीचेस सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर, एंड बिकॉज ऑफ विच अ हाई इंटेंसिटी साउंड, नॉकिंग साउंड इज प्रोड्यूस इन द इंजन. ओके. Octane reading is basically tells you about the knock resistance. Okay, so the answer is A2B3C4. 2, 3, 4. Option A. समझ में आया आप सभी को? So the right answer is option. Next question. Which is the process in the Miller cycle that follows reversible constant volume process next to constant volume process? बेसिकली मिलर साइकिल क्या होती है? एनी आइडिया व्हाट इज द मिलर साइकिल? यस, डू यू नो व्हाट इज द मिलर साइकिल? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मॉडिफाइड ऑटो साइकिल. मिलर साइकिल इज ऑल्सो कॉल्ड एज मॉडिफाइड ऑटो साइकिल. डू यू नो व्हाट इज द मिलर साइकिल? नाउ वी हैव वन एटकिंसन साइकिल ऑल्सो. एक एटकिंसन साइकिल होती है, एक मिलर साइकिल होती है. तो मिलर साइकिल क्या होती है? Yes. Any idea what is a Miller cycle?
it provides, it has more expansion ratio than compression ratio. नो सर, नो आइडिया, ओके, नो प्रॉब्लम। देखिए मिलर साइकिल किस तरह से होती है, पहले तो ये देख लेते हैं। मिलर साइकिल क्या होती है, देखिए यहां से आपने सबसे पहले इन द मिलर साइकिल you have started the compression, then after you have done the heat addition at constant volume, okay, then after that you have done expansion. Now this expansion is done, after that heat is rejected at constant volume and then at constant pressure. अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है इन सारी साइकिलों को समझना। मिलर साइकिल में क्या होता है, in Miller cycle, after doing compression at adiabatic compression, we supply the heat at constant volume, heat supplied at constant volume, then it is adiabatic expansion, reversible adiabatic expansion, then constant volume heat rejection, and then constant pressure heat rejection. okay, यानी जैसे डुअल साइकिल के अंदर heat supply and heat supplied is at constant volume and constant pressure. In Miller cycle, heat is rejected partly at constant volume and partly at constant pressure. Okay. Now question क्या है? In which is the process in the Miller cycle that follows reversible constant volume process? After constant volume process, which process will be there? Obviously, it is reversible adiabatic expansion, option C. Munish Kumar, your answer is absolutely correct. आपका जवाब बिल्कुल सही है। और आप में से जो भी स्टूडेंट्स जो क्लास में आए हैं, those students have joined for this session. If you have not liked and shared the session, please do that. And after leaving the session, at the end of the session, when you go, if you have not subscribed, then please do subscribe the channel. Okay. So Miller cycle समझ में आ गई। In Miller cycle, the heat is supplied firstly at constant volume, but heat rejection take place both at constant volume and constant pressure. थोड़ा सा dual cycle जैसा ही लगता है। In dual cycle, what happens? In dual cycle, heat is supplied at constant volume and constant pressure, and then heat is rejected at constant volume. But heat is supplied at constant volume and constant pressure. Okay, this is dual cycle. This is Miller cycle. Understood? Next, what is defined as the amount of heat absorbed by 1 kg of water at saturation temperature for a given pressure to convert completely into 1 kg of steam at the same temperature? इस हीट को हम क्या बोलते हैं? What is this heat defined as? See, first of all, we are saying that the water is at saturation temperature. When the water is at saturation temperature at a given pressure, that this water is called as saturated liquid. It is called as saturated liquid. जब कोई भी पानी अपने saturation temperature पे पहुंच जाता है, then that water is called saturated liquid or saturated water. And when it reaches at this temperature, we only provide one heat, that is your latent heat. Okay, latent heat is provided to change its phase at constant pressure and constant temperature, to change its phase from saturated liquid to saturated vapor. इस कंडीशन में हम सिर्फ एक ही हीट सप्लाई करते हैं, दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट, टू कन्वर्ट दैट सैचुरेटेड लिक्विड इनटू सैचुरेटेड वेपर. सेंट्रीफ्यूगल पंप डीलिंग विथ मड, स्लरी एंड सीवेज. ऐसे कंडीशन में अगर कोई सेंट्रीफ्यूगल पंप एक ऐसा पंप है which is used to pump a fluid which is having mud, slurry and sewage, then it will be having, see, impeller is an important component of a centrifugal pump, remember. It will be having open impeller, closed impeller, semi-closed or isolated. Tell me, which type of impeller will be there? Open, open, open.
Okay, some of you are saying open. Why it will be open? Open क्यों होना चाहिए उसका impeller? से क्या होगा? What is the advantage of having open impeller? So if the ओपन इम्पेलर यूज करते हैं ऐसे कंडीशन में, दैट इज ऑप्शन ए ओपन इम्पेलर। मेरी कोई टाइमिंग नहीं है डियर गीत सेठी, ऐसा कोई फिक्स टाइम इसलिए नहीं है बिकॉज समटाइम्स बिकॉज ऑफ सम पेड कोर्सेज, बिकॉज ऑफ माई involvement in some paid courses, if I'm taking a paid course maybe in the evening, so the class timing generally in the evening at 8, 9 or 10. Okay, generally I take, see, generally my YouTube class timing is either, see, 8 p.m. to 10 p.m, not later than that. And don't worry, I always share the link of the session, okay, of YT session in my telegram. Okay, जो मेरा टेलीग्राम है गीत, उसमें जो टेलीग्राम मेरा पहले ऑर्गेनाइजेशन में था ना, अभी वही है। आप वहां पे आएंगे, वहां पे लिंक शेयर कर देता हूं, वहां से आप सेशन से पहले ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है गीत। द डार्सी फ्रिक्शन फैक्टर फॉर फुली डेवलप्ड, हाँ रात में ही होगी, चाहे 8 हो चाहे 9 हो या 10 हो, इन्हीं के टाइम पे। 10 तो कभी वैसे बहुत मुश्किल है, मेनली 8 p.m. और 9 p.m. ओके। फ्रिक्शन फैक्टर, डार्सी फ्रिक्शन फैक्टर इज इक्वल टू 64 by Reynolds number if it is fully developed, for fully developed laminar flow। देखिए, अगर आप एसएससी जी की तैयारी कर रहे हैं मुनीश कुमार जी, so you have to do only one thing, that please revise all technical subjects। ओनली डू वन थिंग, टेक्निकल सब्जेक्ट्स को अच्छे से, ऑब्वियस सी बात है, आप टेक्निकल नहीं करोगे तो क्या नॉन टेक करोगे। टेक्निकल सब्जेक्ट्स को फुली रिवाइज करिए आप, कंप्लीट रिवीजन करें आप, एंड आफ्टर दैट यू नीड टू जस्ट प्रैक्टिस। एंड इनमें से भी टेक्निकल में सबसे ज्यादा हाईएस्ट वेटेड सब्जेक्ट जो हैं, वो थर्मल एंड एफएमई है। द हाईएस्ट वेटेड सब्जेक्ट आर थर्मल एंड फ्लूइड मैकेनिक्स। सो प्लीज डू हैव अ गुड प्रैक्टिस ऑफ these subjects। 64 by 1600, solve it, you will get the answer। Yes, what's the value you are getting? So you will get 0.04। next question, laminar developed flow at an average velocity of 5 meter per second occurs in a pipe of 10 centimeter radius। the velocity at 5 centimeter radius is। सर आप रिजल्टेंट ऐप पे टीच कर रहे हो गीत, रिजल्टेंट की ऐप में पेड क्लासेस ही होती हैं। हाँ, रिजल्टेंट में पढ़ाता हूँ मैं, आई टीच एट रिजल्टेंट, बट वी टेक पेड क्लासेस इन द रिजल्टेंट ऐप। फ्री क्लासेस आपकी सिर्फ यूट्यूब पे होती हैं। ओके, फ्री क्लासेस आर ओनली ऑन यूट्यूब एंड पेड क्लासेस आर ऑन रिजल्टेंट ऐप। ओके, एवरेज वेलोसिटी आपको दे रखी है, और देखिए इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है एवरेज वेलोसिटी इज गिवन। सो you know that u is equal to u maximum 1 minus r square by r square। दिस इज अ रिलेशन। पाइप का 10 सेंटीमीटर रेडियस है, और पाइप का रेडियस जो है 10 सेंटीमीटर है। दिस इज 10 centimeter radius, and at this you are provided with average velocity of 5 meter per second। now you know that for laminar flow the average velocity is no problem dear। आप मुझे बता रहे थे कि आप ऐसा कुछ परेशानी है, I could have directly contacted you, right। ऐसा नहीं है कि मैं अपने स्टूडेंट्स को भूल गया हूँ, आई ऑलवेज मिस ऑल माई स्टूडेंट्स। अभी तो आप 8 लोग हैं, बट आई नो दैट देयर यूज्ड टू कम 50, 40, एटलीस्ट 30 स्टूडेंट्स यूज्ड टू कम इन द क्लास, एंड
आई वॉन्ट टू नो दैट उनमें से किसका सिलेक्शन हुआ किसका नहीं हुआ। ओके मैं जानना चाहता हूं, नहीं हुआ तो मैं आपकी हेल्प करने के लिए हूं यहां पर। देखिए, you know that maximum velocity is 2 times of average velocity, that is 2 into 5, and 1 minus r squared, that is 5. R is the local radius, this is 5 by 10 whole square. You will get this velocity, that is 10, 1 minus 25 by 100, okay. So 0.75 into 100 you will get, so 10, that is 7.5. ओके 7.5 मीटर पर सेकेंड आपकी वेलोसिटी आ जाएगी। क्लियर? ऑप्शन ए। वेरी गुड नीरज, योर आंसर इज करेक्ट। रिनॉल्ड, योर आंसर इज करेक्ट, वेरी गुड। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर अ फोर्स वोर्टेक्स? फोर्स वोर्टेक्स लो के बारे में इनमें से कौन सी इंफॉर्मेशन सही है? इट टर्न्स इन एन अपोजिट डायरेक्शन टू अ फ्री वोर्टेक्स, ऑलवेज ऑकर इन कंजंक्शन विद अ फ्री वोर्टेक्स, हैज लीनियर वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस। देखिए, फ्री वोर्टेक्स और फोर्स वोर्टेक्स में इतना ही डिफरेंस है कि फ्री वोर्टेक्स में आपको किसी प्रकार की एक्सटर्नल एनर्जी नहीं देनी होती है। यू डोंट हैव टू सप्लाई एनी एक्सटर्नल एनर्जी फॉर क्रिएटिंग द वोर्टिसेस। ओके, फ्री वोर्टेक्स एंड फोर्स वोर्टेक्स, नो एक्सटर्नल टॉर्क, नो एक्सटर्नल टॉर्क given. Here external torque is given to rotate the, external torque is given to the fluid. Okay, फ्री वोर्टेक्स में क्या होता है, आपकी जो वर्टिसिटी होती है, the vorticity is 0, that means flow is irrotational, but circulation is not 0. Circulation is not 0, that means flow moves over curved path. ओके, यानी फ्लूइड जो है कर्व पाथ पे मूव करता है। जबकि फोर्स वोर्टेक्स में क्या होता है, vorticity is not equal to 0. If vorticity is not 0, that means force vortex flow is complete rotational flow. It is a complete rotational flow. Free vortex flow is a irrotational flow. It is irrotational flow. Force free vortex में, let me just hide myself. फ्री वोर्टेक्स फ्लो में क्या होता है, जो वेलोसिटी होती है टेंजेंशियल वेलोसिटी, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस। ओके, यानी अगर आपके कोई भी आपका जो फ्लूइड है वो सर्कुलर मोशन करता है इस तरीके से, राइट, तो जो वेलोसिटी होगी वो रेडियस से, तो सबसे ज्यादा वेलोसिटी आपकी यहां पर होगी, देन उसके बाद आपकी वेलोसिटी जो होगी वो यहां पर होगी, देन उसके बाद वेलोसिटी यहां पर होगी, यानी वेलोसिटी इस तरीके से रिड्यूस होगी। टेंजेंशियल वेलोसिटी विल बी v1, v2, v3। जैसे जैसे आपका रेडियस बढ़ेगा टेंजेंशियल वेलोसिटी आपकी डिक्रीज होती जाएगी। ओके, राइट, तो टेंजेंशियल वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस, बट हियर वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r और v इज इक्वल टू r इंटू ओमेगा। ओके, ये आपके फोर्स वोर्टेक्स में फॉलो होता है। सो लीनियर वेलोसिटी और टेंजेंशियल वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस, यस, ऑप्शन सी। क्लियर? क्लियर टू एवरीवन? ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज three parallel pipes connected to at two ends have flow rates Q1, Q2 and Q3 respectively, and the corresponding frictional head loss are also given as HL1, HL2 and H3. The correct expression for total flow rate and frictional head loss. देखिए, दो चीजें होती हैं, एक होता है सीरीज और एक होता है पैरेलल कनेक्शन। ये सीरीज पैरेलल कनेक्शन आप कई जगह पढ़ते हैं। यू स्टडी दिस इन कंटेक्स्ट ऑफ रेजिस्टेंस इन इलेक्ट्रिकल, इन कंटेक्स्ट ऑफ स्प्रिंग, राइट, इन कंटेक्स्ट ऑफ द पाइप्स ऑल्सो। सीरीज कनेक्शन क्या होता है, उसमें आपका मेन पर्पस क्या होता है, आपका हेड लॉस देखिए इंक्रीज हो जाता है सीरीज कनेक्शन, द हेड लॉस इंक्रीजेस, बट पैरेलल कनेक्शन में द डिस्चार्ज इंक्रीजेस when you connect the pipes in parallel connection. In series connection the discharge remains same, in parallel connection the head loss remains same. Okay, in all the pipes when they are connected in parallel connection.
So for this question the right answer will be option B. Okay, क्योंकि pipes parallel connection में है तो in that case their discharge is going to get added up and their head loss will be same. Displacement thickness is 4 mm, energy thickness is 3 mm, momentum thickness is 2 mm. Shape factor बताना है आपका. Shape factor, it tells us about how much, it tells us how much velocity profile is distorted. Velocity profile कितनी distorted है इसके बारे में shape factor बताता है. Distortion का मतलब हो गया कि like in laminar flow, velocity profile has more distortion, or distortion means or variation we can say, while in turbulent flow it has less distortion. इसका मतलब ये हुआ कि जो shape factor होता है, the shape factor which is ratio of, shape factor is the ratio of displacement thickness with context of boundary layer, displacement thickness to the momentum thickness. Okay, इनका रेशियो होता है ये. आप डिस्प्लेसमेंट थिकनेस आपको दे रखा है 4, मोमेंटम थिकनेस इज गिवन एज 2, यू विल गेट 2. द आंसर विल बी बी. नाउ जैसे कि मैंने कहा कि शेप फैक्टर इज टेल्स यू अबाउट द डिस्टॉर्शन, हाउ मच वेलोसिटी ऑफ इज डिस्टॉर्टेड, राइट. इसका मतलब शेप फैक्टर ऑफ द लेमिनार फ्लो का जो शेप फैक्टर होगा विच इज डिनोटेड बाय एच विल बी ग्रेटर देन शेप फैक्टर ऑफ टर्बुलेंट फ्लो. Okay, next question. For a laminar flow through a circular pipe, the value of friction coefficient in Darcy-Weisbach equation is 0.02. The Reynolds number for the flow. Quickly, come on guys. थोड़ा speed increase करते हैं. Let's increase the speed little bit. देखिए आपको यहाँ पर friction coefficient कह रहा है. Friction coefficient means fanning factor. And you should know that friction factor जो होता है हमारा, that is equal to 4 times of friction coefficient और fanning factor. Okay, इसको आप fanning factor भी कहते हैं. तो friction factor is 4 times of that. Now according to Darcy-Weisbach equation and for laminar flow through a circular pipe, the friction coefficient is 16 by Reynolds number. If this is given as 0.02, 16 by Reynolds number, so Reynolds number will be equal to 16 by 0.02. Okay, so इसको solve करेंगे तो 800 आपका आ जाएगा वैल्यू. वेरी गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेट पॉजिटिव सेक्शन हेड इन द सेंट्रीफ्यूगल पंप इज इक्वल टू. नेट पॉजिटिव सेक्शन हेड हम क्यों मेंटेन करते हैं? नेट पॉजिटिव सेक्शन हेड विच इज कॉल्ड NPSH is required to avoid cavitation at inlet of centrifugal pump. तो centrifugal pump पे inlet पे is a problem of cavitation which has to be avoided, and for that you need to maintain a net positive suction head, right? ना इसका फॉर्मूला क्या होता है NPSH का? NPSH, it is ratio of absolute pressure head at the inlet of the pump minus vapor pressure head plus kinetic head. Okay, this is the formula. So इनमें से क्या आंसर होगा? Absolute vapor pressure head at inlet minus absolute vapor. So this is pressure head minus vapor pressure head. क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन द Rankine साइकिल व्हेन द सुपरहीटेड स्टीम इज यूज्ड. Rankine साइकिल में अगर आप सुपरहीटेड स्टीम यूज करेंगे तो क्या होगा? देखिए, इफ यू प्लॉट Rankine साइकिल ऑन अ टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम, ओके,
नॉर्मली भी हम सुपर हीटेड स्टीम ही यूज करते हैं, बट लेट से आप और सुपर हीटेड स्टीम यूज कर दे रहे हैं. दिस इज ऑल्सो सुपर हीटेड स्टीम गोइंग इन द टर्बाइन. बट अगर आप और सुपर हीटिंग करते हैं, द मोर इज सुपर हीटिंग, दिस इज सुपर हीटिंग. सुपर हीटिंग में क्या होता है, कांस्टेंट प्रेशर पे आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं. तो उससे क्या होगा, आपकी जो ड्राइनेस फ्रैक्शन है, ड्राइनेस फ्रैक्शन इंक्रीज हो जाता है एंड ऑल्सो एफिशिएंसी इंक्रीजेस. ओके, ये पॉइंट स्टीम कंजम्पशन इंक्रीज होगा. नो, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. स्टीम ड्राइनेस आफ्टर एक्सपेंशन विल इंक्रीज. दिस इज राइट. एक्सपेंशन करने के बाद ड्राइनेस, जॉब लीव करके एमटेक करना. देखिए रेनॉल्ड, आप एमटेक किस में करना चाहते हैं, कहाँ से करना चाहते हैं, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. मैं आपको बताता हूँ, बीटेक करने के बाद, आफ्टर डूइंग माई बीटेक, माई CTC वॉज 3.3 lakh. आफ्टर डूइंग एमटेक फ्रॉम थापर, ऑल्दो थापर यूनिवर्सिटी से किया था, बट अगर आप NIT से भी करेंगे तो इतना कोई अच्छा पैकेज नहीं लगता. इफ यू डू एमटेक इन थर्मल, इफ यू डू डिजाइन, देन यू कैन गेट अप टू 9 lakh, ओके, और 10 lakh. बट यहाँ से भी कितना लगा था, 3.6 lakh. टीचिंग में 3.6. आप इमेजिन करिए मेरे को क्या फायदा हुआ. एंड ये तो फिर भी है कि जहां से आपको प्लेसमेंट मिलता है, फ्रॉम वेयर यू गेट प्लेसमेंट. देयर आर सम कॉलेजेस फ्रॉम विच यू, इफ यू डू एमटेक, यू विल नॉट गेट द प्लेसमेंट ऑल्सो. तो ऐसा कुछ खास फायदा नहीं होता. आप खुद सोच लीजिए, अगर आपकी सैलरी ऑलरेडी 3.3 lakh या ऐसे कुछ है, 4 lakh के अप्रॉक्स, देयर इज नो नीड फॉर एमटेक. आप कुछ और आप कर सकते हैं. आप किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, वो कर सकते हैं रेनॉल्ड. ओके, आप सोच सकते हैं कि क्या सैलरी है. एंड दिस आई एम टेलिंग यू इन 2017. आज के समय मान लेते हैं कि लेट से 4 lakh मिल जाएगा आपको, 5 lakh मिल जाएगा. ओके, सो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए. प्रेजेंट आई एम वर्किंग एट NHPC. You are having a government job, Renault. If you are talking about NHPC, that means you are having government job. Government job है आपके पास. If you are having government job, then why you have to leave it? That too for MTech. There is no point. MTech करने से कोई खास एडवांटेज नहीं मिलता आपको, मैं बता देता हूँ. An oil separator is located in the. Oil separator कहाँ पे लगता है? कुछ कंपनीज होती हैं, सॉफ्टवेयर कंपनी में एमटेक कर लेते हैं तो आपको थोड़ा सा आपकी पोस्ट बढ़ जाती है. एमटेक करने को फायदे नहीं है. आई एम टेलिंग यू, बहुत से लोग एमटेक करके घूम रहे हैं. इवन एमटेक की डिग्री है बट फिर भी जॉब नहीं है, ऐसा भी हालत है. ओके, सो आई एम टेलिंग यू, आई एम नॉट डीमोटिवेटिंग यू फॉर नॉट डूइंग एमटेक, बट इंडिया में जिस तरह से एमटेक कराया जाता है, सब लोग एमटेक कर रहे हैं. जैसे बीटेक के बाद एक अनएम्प्लॉयमेंट की एक रेस निकल रही थी, नाउ आफ्टर एमटेक ऑल्सो देयर इज अ रेस ऑफ अनएम्प्लॉयड स्टूडेंट्स आफ्टर एमटेक, जिनके पास एमटेक सब एमटेक कर रहे हैं. बिकॉज दोज हु आर नॉट एबल टू गेट गुड मार्क्स इन द गेट एग्जाम, जिनके मार्क्स मैकेनिकल में लेस देन 80 रह जाते हैं, वो सब एमटेक ही करते हैं. सोचिए कितने सारे स्टूडेंट्स होंगे ऐसे. नाउ एन ऑयल सेपरेटर इज इंस्टॉल्ड. ऑयल सेपरेटर कहाँ पे लगा होगा, जस्ट थिंक अबाउट दिस. ऑयल सेपरेटर इज बेसिकली, it is installed between compressor and condenser. It is used between compressor and condenser. इनके बीच में लगाया जाता है ऑयल सेपरेटर. ओके, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग. कंप्रेशर का मतलब क्या है, कंप्रेशर के बाद और कंडेंसर के बीच में, व्हाट इज दिस, वी हैव अ डिस्चार्ज लाइन. ओके, after compressor we have discharge, so we have discharge line. Okay, so कहाँ पे लगाया जाता है ऑयल सेपरेटर, in the discharge line. Option A. If u and v component of velocity in the x and y direction are u is equal to a y and v is equal to b x plus c y, then flow exists when.
flow exists. When we say flow exists, what is the meaning of this thing? Flow exists when continuity equation is satisfied. And what is continuity equation? For a two-dimensional, steady and incompressible flow, two-dimensional, steady and incompressible flow, the continuity equation is del u by del x plus del v by del y equal to 0. ये है continuity equation. आपको u दे रखा है, del u by del x, आप del v by del y निकालेंगे. Okay, so del u by del x will be 0, del v by del y will be c will be 0. This is the result you get. Option D. Okay. Velocity potential function or potential function only exist when the flow is. देखिए, velocity potential function which is a scalar function of space and time. Velocity potential function is scalar function denoted by phi. It is scalar function of space and time. Even if you do the degree from IIT, what is does IIT में भी ऐसा? देखिए, आप एमटेक करना क्यों चाहते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, आप एमटेक करना क्यों चाहते हैं? आपके पास एनएचपीसी में जो जॉब है उसमें प्रमोशन नहीं मिल रहा है आपको लगता है कि जो एमटेक करके आते हैं उनका जल्दी प्रमोशन हो जाता है. इफ दैट इज द केस यू कैन डू एमटेक. फिर तो, लेकिन आप जॉब मत छोड़िए. जिस तरह का माहौल है रेनॉल्ड, द टाइप ऑफ एटमॉस्फेयर दैट वी हैव राइट नाउ, स्पेशली द if you see the unemployment, losing a government job for MTech, especially at this point of time, will not be a good decision. I will not say will be a stupid decision, but it will not be a good decision. Okay? अगर आप velocity potential function को किसी भी डायरेक्शन में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आपको velocity मिल जाएगी in that particular direction. Okay? U, V and W are the velocity component in the x, y and z direction. And velocity potential function exists only for irrotational flow. ये सिर्फ irrotational flow के लिए होता है. जबकि जो stream function होता है, stream function exists for both rotational and irrotational flow. For both rotational and irrotational. Okay. Next question. In the steam power plant operating on Rankine cycle, superheated steam enters the turbine with enthalpy of 3090 and exit at the condenser pressure of 20 kilopascal with the enthalpy of 2130. A pump utilizing 5 kilojoule of energy is used to pump feedback water. Enthalpy at the exit of the pump is 230. The heat rate of the cycle is. थोड़ा बड़ा सा numerical है, but I think we can solve it, right? So how to solve this question? Superheated steam in the Rankine cycle, superheated steam enters at the enthalpy. What enthalpy superheated steam enters? The enthalpy is given as how much? 3090. Okay, and exit at the condenser pressure 20 kilopascal. That means this is the point where enthalpy is 2130. Okay. A pump utilizing 5. So work of the pump is 5. But Renault, I think you should not just simply ask me and okay, Vikas Sir has said MTech nahi karna and we don't have to do MTech. You need to firstly tell me honestly why you want to do the MTech. You feel like that in that NHPC, in that organization, all your colleagues are getting good quick promotion because they have higher degree. Is it like that? NHPC में तो ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जो जेई करके बनते हैं. अगर आपको लगता है कि दैट you are not standing out in front of the other people, let me tell you that if you have a government job, आपको promotion मिलेगा. Okay, you will definitely get promotion after a particular year of experience. So you will get turbine work from here in kilojoule per kg. The pump work is given to you. Okay, 5. Now question is, what is heat rate? Heat rate is 3600 divided by net work.
This is a formula for the heat rate. Sorry. 3600 by net work into heat supplied. This is a formula. Or it is equal to 1 by efficiency. So heat supply you have to find. Now for heat supply you need to find this enthalpy H2. Now enthalpy at the exit of the pump is given 230. This is given. So you can simply say 3600 into 3090 minus 230 will give you heat supplied. Divided by net work is turbine work 3090 minus 2130 minus pump work which is 5. You will get the answer. तो फिर एमटेक बारे मत सोचिए आप. हाँ, आप गेट का एग्जाम देते रहिए. रेनॉल्ड, यू ट्राई टू गिव गेट एग्जाम. इफ यू गेट अ गुड रैंक देन डायरेक्टली गो फॉर द अदर पीएसयू. ओके, आप गेट के एग्जाम में फिर देते रहिए और आपकी अच्छी रैंक आती है, रियली गुड रैंक, तो आप पीएसयू की सीधे टारगेट करिए. ओके, डोंट लीव योर गवर्नमेंट जॉब फॉर दीज काइंड्स ऑफ स्पेशली एमटेक. आई फील लाइक अगर मैंने एमटेक ना करके 1 साल और दिया होता तो शायद मेरा और भी अच्छा होता. 3600 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है. ओके, इवन इफ यू सिंपली राइट हीट सप्लाइड बाय, बिकॉज दे आर नॉट सेइंग द हीट रेट ऑफ द साइकिल इन किलो जूल पर किलोवाट आवर. If they would have said kilojoule per kilowatt hour, then you would have multiplied with 3600. If not, then don't need to multiply with 3600. You will get 2.99. Okay. If kilojoule per kilowatt hour में अगर पूछा जाता तो आप 3600 से मल्टीप्लाई करते. This is the last question for today's session. And I want to ask you one thing, everyone, that दिवाली पे आप लोगों का क्या प्लान है? Are you ready to take one class on 1st of November? 1st नवंबर को अगर मैं क्लास लेता हूँ अराउंड सेम टाइम लाइक 8 PM, विल यू बी रेडी टू टेक दिस सेशन एट 8 PM? द फिगर बिलो शोज 4 पॉइंट्स P, Q, R and S. किसमें टीचिंग करना चाहते हो रेनॉल्ड? कहाँ टीचिंग करना चाहते हो? टीचिंग में आपको क्या लग रहा है, कितना पैसा मिल रहा है? द कंडीशंस हैव चेंज नाउ डियर. In a college, if you have just done MTech, then you will be offered only 30,000-40,000 max to max. And maybe at this point of time, you should, PhD is mandatory for teaching in engineering college. And if you want to teach in some coachings like this, coaching का भी बहुत बुरा हाल है, and you can see the examples also. तो आप बेकार में आपको वो हो रहा है, मुझे लगता है आपको ऐसा लग रहा है दूर के ढोल सुहाने लग रहे हैं आपको. इट इज नथिंग लाइक दैट. राइट नाउ द कंडीशन इन टीचिंग, स्पेशली द कोचिंग एंड टीचिंग फील्ड, इज नॉट दैट गुड. ओके, मैं फिर से कह रहा हूं आपको, डोंट लुक फॉर दीज. आई एम नॉट डीमोटिवेटिंग यू. इफ यू वांट टू टीच, यू कैन डू द टीचिंग अलॉन्ग विद द जॉब. इफ यू कैन ओपन अ यूट्यूब चैनल एंड यू कैन स्टार्ट टीचिंग. बट पूरा जॉब छोड़ के प्राइवेट में, मतलब गवर्नमेंट जॉब छोड़ के प्राइवेट में टीचिंग करना, आई थिंक इट विल बी ए now it will be a stupid thing to do. There are 4 points marked P, Q, P, S, Q, R on a plate. Fluid is allowed to flow over in the form of a lamina over the entire plate. Which of the following the correct relation for shear stress? Now you know that the shear stress is inversely proportional to square root of distance from the leading edge, right? So if this is the plate and on this plate the fluid is flowing, this is the leading edge. So from the leading edge, as the x is increasing, the shear stress will decrease. So that means the maximum shear stress will be at point P, followed by point S, followed by point Q, followed by point R. So if you're talking the order of shear stress, so it will be P, S, Q, R. This is a decreasing order of the shear stress. Okay, that's all, my dear. Let's do one more question, then we are going to end the session. In a model built on Freud's law of similarity, a phenomena lasts for 20 minutes
if the model scale is 1/25, the duration of the phenomena in the prototype in minute is. When we are studying about the Freud model law, for a Freud model, the formula was V by under root GL, okay, and we get a relation of the, according to Freud model, we get a relation of the time period of the prototype by time period of the model as square root of LP by LM, where LP by LM is equal to 25, okay. So this 1/25 is 1/25 means LM by LP was given as 1/25, because you know that prototype is always having more dimension than model. जो prototype का dimension होता है model से हमेशा ज़्यादा होता है, okay. So the scale ratio is given is inverse scale ratio 1/25. So LP by LM will be this. This will be square root of 25. It is 5. So time period in the prototype TP will be equal to 20 into 5. That is 100 minutes. Okay, that's all, my dear students. Thank you so much for joining for this session. Rest of the question will continue on in some other session. And I have to ask you something. क्या फर्स्ट नवंबर को अगर मैं क्लास लेता हूं, इफ आई टेक द क्लास ऑन 1st November at 8 PM, विल यू गाइस बी अवेलेबल? ऐसा तो नहीं कि आप दिवाली मना रहे होंगे. if you will not be available, then I will not take the class on 1st November. Yes, tell me, will you be able to come on 1st November at 8 PM or 9 PM or 9 PM at any time you feel like? Okay, you can tell me, because I am going on a leave for 8 to 9 days. I will not be able to take the class from 3rd November to 9th November. So that's why I am free on 1st and 2nd. First of all, tell me on 1st November and also on 2nd November. Let's say I am 1st and 2nd November. On 2nd November, I can take the class at 5 PM in the evening. At 5 PM in evening, I can take the class. Okay, these two classes will be for, you can say, SSCG CBD 2. If you want, we can come, we can do this, and otherwise not a problem. आप रेडी हैं? 1st November को भी हम 5 PM पे रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम. 5 PM पे रख सकते हैं. आप 5 PM पे आना चाहते हैं 5 PM, अदरवाइज 8 to 9 PM इज फाइन. 8 PM, 1st November 8 PM, okay. What about, see, 2nd November को मैं थोड़ा जल्दी रखूंगा क्लास. I will be taking the class little bit early because on 3rd November morning I have a flight to catch, so I can't take the class late in the night. So 5 PM is fine on 2nd November. I want to take 2 classes before going on this leave. So if you are ready, then we can take these classes, otherwise not a problem. Yes, are you guys ready to take the classes on 1st and 2nd November? Will you come in the class? Tell me, everyone. 2nd November will be 5 PM and 1st November will be 8 PM. If you are ready, I can take the class. I have to ask you because देखिए, मैं क्लास किसके लेता हूँ? आप लोग, अगर आप क्लास में नहीं आएंगे, if you will not come in the class, then what's the point of taking the lecture, right? So if you are ready, I can take the class. I can tell my team that prepare the class for SSCG CBD 2, thermal and FM, obviously my subjects. Are you ready? Come on, guys, tell me quickly. Are you ready to attend these join these classes on 1st and 2nd November? Will you be there? Neeraj is there. What about the other students? दिवाली मनाने वाले हैं आप लोग. देखिए, दिवाली तो आप पूरे दिन मनाएंगे. क्या आप मुझे 1 घंटा दे सकते हैं? Can you give 1 hour to study? Not on 31st. I'm not saying for 31st, only for 1st and 2nd November. Are you ready? Only Neeraj. Okay, you can just let me know on Telegram. अगर आप लोग ready हैं तो मैं 1st और 2nd के लिए बोल दूंगा, otherwise not a problem. Okay. Rakesh is also saying yes. At least 7 students are there in the class. I want the affirmation from all the 7 students. आप 7 लोग हैं.
आप 7 लोग का रिस्पॉन्स चाहिए मुझे. आई वॉन्ट रिस्पॉन्स फ्रॉम ऑल द 7 स्टूडेंट्स. कम ऑन, आर यू रेडी? आर यू रेडी? विल यू बी कमिंग इन द क्लास? अरे भाई 7 लोग तो रिस्पॉन्स कर सकते हैं. दीज 7 स्टूडेंट्स शुड रिस्पॉन्स इन द चैट बॉक्स. कम ऑन. Okay, no problem. I can see 2 students have responded yes. So you can just let me know and I will ask my team to plan the classes on 1st and 2nd November. Okay, create the classes. Okay, thank you so much. Good night, take care and happy Diwali to all of you. Happy Diwali to all of you in advance and आप लोग अच्छे से दिवाली मनाइए, celebrate Diwali and also enjoy, celebrate Diwali, and if you get time you can also study for 1 or 2 hours, okay, because you have your exam in the month of December. So each day is important, celebration is also important, but you should also focus on your goal. Okay, thank you so much. Good night, take care.